Good morning, all of you. In last lecture, we study the share some laws concept, industrial law concept. From today, we are study the next concept, industrial law concept, award. Award means the reward done by your employmentship. जेव्हा तुम्ही काही करणार आहात ॲज अ एम्प्लॉयर ॲज अ एम्प्लॉई, तर तुम्हाला जे रिवॉर्ड भेटणार आहेत लाईक ग्रॅज्युटी, गव्हर्नमेंट बेनिफिट, सेक्शन 30 days, 40 days, एंड ऑल, उसके लिए जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कैसे देने चाहिए अंडर द लेबर कोड एंड लेबर लॉ आर द एक्सप्लेनिंग इन शॉर्टली. ओके, today's lecture is briefly started. So under this, the section 2b of 16, 17, 17a, 18, 19, 20 and 21 of labor law 1947. किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? लेबर कोड के लेबर लॉ 1947 के अंडर सेक्शन 16, सेक्शन 17, 17a, 18, 19, 20 एंड 21 के सेक्शन क्लॉज बी में उसने क्या डिफाइन किया है? द वर्ड अवॉर्ड मींस इज अ इंटरिम और द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ अन इंडस्ट्री डिस्प्यूट or any question related authority by a labor court, industry tribunal and national tribunal, and including the attribute award under section 10A. तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो दूसरी लाइन में उसने बोला है द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड काउंसिल कॉर्डर्स अवार्ड, कि बोर्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट रहेगा यानी कंक्लूजन ऑफ योर रिपोर्ट, जो हो रहे झगड़े उसका जो कंक्लूड रहेगा, और वो कंक्लूजन एक तो किसी के बेनिफिशियल का रहेगा या किसी के लॉस का रहेगा. द वे ऑफ बेनिफिशियल इट इज अवार्ड, एंड अवार्ड फॉर मस्ट बी रिटन एंड साइन बाय द ऑल पार्टीज. दोनों तरफ से लिखा होना चाहिए, यानी कि जो बात मैंने बोला वही बात उसी ने उसकी तरफ से भी होनी चाहिए और दोनों एक्सेप्टेबल होने चाहिए. देन दैट सबमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट. एवरी अवार्ड shall be published within the 30 days of receipt by appointment government. कितने दिन में? जब वो हुई है बात उसके नेक्स्ट 30 days के अंदर वो अवॉर्डेबल वर्क होना चाहिए. द अवार्ड is beginning is bidding of all parties to the industry dispatch of all others participation. Participation summarized to appear the procedure of qualities and dispatch. Award shall be final and questioned by the court. अवार्ड जो रहेगा वो फाइनल रहेगा, फिर भी अगर वो जो लेबर कोर्ट है उसमें अगर वो फाइनलाइज नहीं हो रहा है, देन इट इज सबमिटेड इनटू द कोर्ट एंड फाइल यू सूट अ फाइल. सूट करना है ना, केस करना. यू आल्सो सूट अ फाइल in court, and then this suit is calculation under the courtesan system, law system, labor law system, and after the filing of this word, the award remaining in the operation in period of any year from the date which is the award becoming enforceable. अब जब अवार्ड किया जाता है तो उस पीरियड के 1 year फ्रॉम दिस डेट, यानी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को केस की अवार्ड फाइल हुई है यानी रिपोर्ट बना है, तो फ्रॉम दिस 1 जनवरी टू नेक्स्ट 31 दिसंबर तक की डेट के अंदर इन्फोर्सेबल हो सकता है, यानी उसके ऊपर हम फोर्स कर सकते हैं कि वो रॉन्ग है या कुछ है और के फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, वरना उसको एक्सेप्टेबल मान के उसके वे फॉलो किया जाता है. व्हेन द अवार्ड इज रिजेक्टेड और मॉडिफाइड बाय ऑर्डर इन लीड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट, सच अवार्ड शैल बी इनफोर्सेबल आफ्टर एक्सपायर ऑफ 15 days. यानी जब इन्फोर्सेबल किया जाता है और उसको एक्सपायर किया जाता है या उसको मॉडिफाई किया जाता है तो उसके लिए भी नेक्स्ट 15 days दिए हुए हैं कि 30 दिन के अंदर अगर तुम्हारा वो जो अवार्ड फाइल है वो नहीं रिकवर हो रहा है तो नेक्स्ट 15 days में उसको रिकवर करो और उसको कवर करके मुझे भेजो. एंड इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल मैटर शैल बी पार्ट ऑफ द अवार्ड. कोई कॉन्फिडेंशियल पार्ट जो रहेगा इस award के अंदर नहीं लिया जाएगा. अब जब अवार्ड्स लिखे जाते हैं तो अवार्ड्स लिखने से पहले कुछ सेटलमेंट किए जाते हैं. अब सेटलमेंट या सिचुएशन समझने के लिए पहले इधर टू पार्टीज के वन इज सूटो फाइल एंड सेकंड इन सूटो फाइल ऑन देम, यानी जिसके ऊपर केस की जाती है वो एक बंदा और जिसके ऊपर केस करनी है वो एक बंदा, उन दोनों के बारे में जो लिखा जाता है वो दोनों के बीच में अगर कोई कमेटी सेटलमेंट कर रही है, इट मीन्स योर अथॉरिटर कमेटी जो इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे हम बोलेंगे जो लेबर लॉस को फॉलो करने वाली लेबर्स को, अगर वो सेटलमेंट करती है तो उस सेटलमेंट के बारे में उसने बोला हुआ है. और वो सेटलमेंट कैसी होनी चाहिए? अंडर दिस लॉ सेक्शन 18 और
टू 21 के बीच में उसने लिखा हुआ है, जो सेक्शन कहाँ कहाँ फॉलो होने वाले लेबर लॉ के, अल्सो इन 1890 2021 अवार्ड सेक्शन के इसमें ही लिखा हुआ है. तो दिस इज सेक्शंस. द ऑल पार्टी आर द इंडस्ट्रियल डिस्पैचर, कि जो सेटलमेंट होगा वो कब होगा कि दोनों पार्टी कहाँ इंडस्ट्री रिलेटेड होनी चाहिए. क्योंकि बाहर का बंदा रहा तो यहाँ सेटलमेंट के लिए हाँ बोलेगा, बाहर से उसे कोई और चढ़ा सकता है, देन सेटलमेंट आर रिजेक्टेड. और बार बार ऐसा होने से क्या होगा कि द सेटलमेंट्स आर रिजेक्टेड एंड इट्स इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस. ओके, द ऑल पार्टी आर समराइज टू प्रोसीडिंग द पार्टीज टू डिस्पैच. और दोनों रेडी होनी चाहिए कि ये बात डिस्पैच हो जाए और खत्म हो जाए. वेन एवर द पार्टीज आर एम्प्लॉयर और his or here his succeed for assigning, then the all parties are who are the employed is established of which dispatch and why dispatch. Related on the date the dispatch of all parties who were employed in substrate. Settlement comes into the operation on such date is agreed upon the parties to the dispatch of MOI. MOI is a member of मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट. अब एमओएस लिखा जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, उसमें क्या क्या सेटलमेंट्स है, यानी इन शॉर्ट एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, एक मोमेंट लिखा जाएगा. अब सच सेटलमेंट में क्या होने, बाइंडिंग ऑफ सच पीरियड is agree to period to agree in 6 month का from the date of sign of MOA. It shall be continued to be the building of expired 2 month and from the डेट ऑफ विच, यानी उसके बाद एमओएस का जो लिखा रहेगा वहां से नेक्स्ट 2 महीने के अंदर उसको फॉलो करके सेटलमेंट को तुम्हें खत्म करना है. इसके बाद अगर मेमोरेंडम को नहीं वर्क हो रहा है या जो होने नहीं वाला है तो उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक के बारे में बोला हुआ है, जो सेक्शन 2Q के अंदर आती है. अब स्ट्राइक मीन्स द कैजुअल स्टॉपिंग वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड. स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या किया उसने, इट मीन्स द cessation of stopping the work by a body यानी ग्रुप ऑफ द यूनिट, एक तरह के जैसे एम्प्लॉय लेबर स्ट्राइक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ इंडस्ट्री एक्शन फॉर कॉम्बिनेशन, एक होके एक्शन करना इज अ कंफ्यूज कंस्ट्रक्ट द रिफ्यूज टू रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन, यानी सबकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगी रिगार्डिंग टू हिज वर्क. ओके, द कॉसेशन ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय वर्कमैन इज एम्प्लॉयड और अ कंसेशन रिफ्यूज बाय द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड. वो क्या हो सकता है, पहले क्या होंगे स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय वर्कमैन, या दूसरा क्या हो सकता है रिफ्यूज करना, एक तो काम करने से इनकार करना या काम करना रोक देना, दो हो सकता है. मियरली द रिमेन द एब्सेंस ऑफ वर्क डज नॉट अमाउंट विथ टेकिंग द पार्ट ऑफ स्ट्राइक. अब स्ट्राइक में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो काम करना ही पसंद नहीं करते. स्टॉपिंग और जो पार्ट नहीं होते दे आर द अमाउंट ऑफ does not amount of taking the part of in strike, stop and or refuse the work even if few minutes are may amount of strike, they are the consist. अब कुछ लोग रहते हैं जो वो स्ट्राइक वगैरह में हिस्सा लेना पसंद नहीं करते थे यार जस्ट. Okay, then procedure. The next point is procedure of strike. According to the section 22, the no person is employed in the public utility service shall within the क्या होना चाहिए procedure without the given the any employer notice strike as a हेरिन आफ्टर द प्रोवाइडिंग विद इन, यानी पहले हमें क्या देना है उसकी नोटिस देना है कि अगर हमें चाहिए वैसा काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे विद इन द 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस. और उसके बाद 14 दिन वेट करना है, 15वें दिन हमें स्ट्राइक शुरू करनी है. ओके, ड्यूरिंग द pendency of the council the procedure before the cancellation offer is 7 days after the cancellation of such procedure. अब उसके बाद 7 दिन में वो हमें स्ट्राइक कवर करके लेनी है. अभी इलीगल स्ट्राइक कब होगी, जैसे कि ऊपर बोला हुआ है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगी. तो पहले स्ट्राइक कमेटी डिक्लेयर टू इन कंसेशन ऑफ सेक्शन 22, देन स्ट्राइक कमेटी ऑफ डिक्लेयर इन कंसेशन ऑफ सेक्शन 23, यानी दोनों सेक्शन को फॉलो ना करे. इफ इट इज इन breach of contract then employee it is the public of utility service. If not, notice under the section 22 is not given if comment during the award of settlement period, if comes during the 7 days of completion conclave, 7 days, and if compressed during the within 2 months of completion adjust the procedure in the inducing involvement of during the strike.
Hmm? Then the next point are continue in next lecture. Thank you all of you. Hey guys, welcome to my legal classes. This is Ganesh Pujari, and in my last class we have discussed all the provisions related to strike as far as the Industrial Dispute Act is concerned. Here in this video I am going to discuss different types of strike, and in the first slide I am going to show the list of strikes that I am going to discuss. Why to waste time? Let's get into the first slide. I am going to discuss as many as 11 types of strikes. They are general strikes, stay in strikes, go slow strike, work to rule strike, tool down, pen down, sit down strike, hunger strike, relay strike, lightning or wildcat or quick strike, sympathetic strike, mass resignations and gherao. All of this and most of this I am going to deal with case laws also. Let's get into the general strike. The first type of strike, that is general strike, which is usually called by all the unions all over India, and these are making common demands like increasing the minimum wages or removal of contract labor system or organizing the unorganized sector, improvement in the labor laws, all of those stuff, and they usually happen twice in a year, and because they are generally called by all, it is called as general strike. The second category is stay in strike, where the workmen come inside their workplace. They sit at their workplace but they are not doing any work. They are staying back at their workplace, and the two examples here are Punjab National Bank Limited versus their workmen and LD Sugar Mills versus Ram Sarab. Here in the case law, that is Punjab National Bank Limited versus their workmen, the employees came inside the bank, they sat in their respective seats, but they didn't vacate the same. Now it is a problematic situation as far as Supreme Court is concerned, and it told that it is a problematic situation created by the union and shall considered as strike. Likewise, in the LD Sugar Mills versus Ram Sarup, also it was held that staying strikes or tool down strikes, etc., in which the workers, though physically present, virtually withhold their labor, are as much as strike as there are workers physically present, but then as they are not working, it is a kind of absent also, which is what held in this particular case law. The third category is go slow strike. But remember, go slow is always a confusion whether to consider it as a strike or not. Because here there is no cessation of work or there is no stoppage of work. I have four case laws here. In the first three case laws, that is Bal Santok Bal versus Fine Knitting Company Limited and Bharat Sugar Mills Limited versus Jai Singh and Sasa Musa Sugar Works Private Limited versus Shobrati Khan. In all of these cases, it was held that go slow is not a strike. However, there were observations also. Like for example, in the case law of Bharat Sugar Mills Limited versus Jai Singh, it was held that the go slow tactics are far more serious than the normal strikes because the employee is getting full wages whereas the employer is not getting full output. So that way it is dangerous. And in the Sasa Musa Sugar Works Private Limited versus Shobrati Khan, the Justice V.V. Giri held that this is enemy number one because by doing go slow, the employee becomes responsible for misconduct, and by that he may lose his job, which causes to his livelihood. Same way, the employer is also losing his output. So it is enemy number one as far as VV Giri is concerned. And the last case law, that is Firestone Tire and Rubber Company of India Limited versus Boja Sheth, it was held that the production target which was not achieved by the workman can permit the dismissal of employees concerned. Here the target was 28 whereas the production was only 8, or another case the target was 16 whereas the production was only 8, and Supreme Court permitted to dismiss such employees concerned because their go slow was causing the employer. That way you need to remember that it is a dangerous tactic also which can be utilized by the workman. That is all about go slow strike.
The next type of strike is work to rule strike. What happens here? The workmen start following the rules in 100% manner. Like they will start doing 100% compliance. They will not do any kind of adjustment. Like for example, in the railway workers protest which happened in the year 2018, all the workmen decided that if there are any repair works need to be done, then they will follow the manual, and if only all the equipments according to the manual are available, then they will do the repair work, otherwise they will not do. That is the way they do the work to rule strike. Now one another example in the same case is they have decided that the one who is driving the goods train will not drive the passenger train. That was one another decision. Likewise, they also decided that they will not work beyond the prescribed working hours. All of these are working according to the rule of their department. This is called work to rule strike, and by doing this they will create lot of inconvenience and they will ensure that the production has come down or the turnover has come down. This is the fourth type of strike. The fifth type is tool down, pen down or sit down strike. What happens here? The workman reports to the workplace but they are not working. Tool down means they are not starting the work in their respective machine. Pen down means the people who are at official level like the bank employees, they are not lifting the pen. That means they are not literally logging into their system. That is pen down. Or sit down means they are just going and sitting in their workplace. That is called sit down strike, and this is also one of the major type of strike, and the examples for that is LD Sugar Mills versus Ram Sarup and the Municipal Corporation employees of Punjab, which happened in the year 1988, where they observed a pen down strike to protest against the non-acceptance of their demands by the state government. Likewise, the Bank of India versus TS Kesawala, here Justice Jaswant observed that the helpless labor have waged the relentless battles against the mighty managements. Now he was in support of the workmen here, and these are the few examples for tool down or pen down or sit down strikes. Then comes the sixth type, which is one of the major way of pushing the management to take the decision quickly, that is hunger strike. And one of the example that you can quote is the strike by Bajaj auto workers, which happened for 2 days on 7th and 8th of January 2017. The seventh type is relay strike. Relay means one batch does the strike and after that the same batch going to work, and the batch which has already completed the work will come back and sit and continue the strike. It is just like relay run. One person completes the run and he passes the baton and the other person starts running. Likewise here the strike is continued. They are not stopping the strike, at the same time they are not stopping the work also, which is called as relay strike. Here the example is Maruti Udyog Employees Union versus State of Haryana. Here they have done hunger strike in a relay mode. The eighth type is lightning, wildcat or quick strike. These strikes are not planned. On a particular issue, suddenly they start the strike and every workman come and join them. That is called lightning or wildcat or quick strike, and these strikes are mostly illegal strike because they are not giving any notice. Now in public utility services, you have to give minimum notice of 14 days, and in other industries, the standing orders are controlling the number of days of notice for strike. And here in the case law, that is Swami Oil Mills versus their workers, there was a lightning strike and it was held that because there was no notice, it was an illegal strike. The ninth type is sympathetic strike. This is done to show sympathy to somebody else. Now there is a group of industries in a particular area. One industry may be going through certain, the workers are going to certain pain or they have some issues with the management. Now the other industries which are around, they are also supporting them in some manner. That is called as sympathetic strike. Maybe they are going out and standing in front of the gate of the company. All this can be done. That is called sympathetic strike. And then comes the mass resignations. Mass resignation, what happens here? Lot of people start resigning at a time.
to ensure that the employer is coming under pressure and give whatever they are asking for, or the demands are satisfied. Here the example is the doctors mass resignation happened in West Bengal during June 2019, where within 2 weeks almost 500 doctors resigned, and that can be an example for mass resignations. The last type of strike that I am discussing here is Gherao, which is a Hindi term. What happens here? The workman will have certain demand and management is not bothering. In that case, all the workmen come and make a circle around that particular officer or certain management staff. By making a mob around them, they are pressurizing the management to listen to them or satisfy their demand. And in the case law, that is Jaya Engineering Works Limited versus State of West Bengal, the term is tried to define as to cover or to encircle, and I have given a lot of details pertaining to Gherao. You can read through it once, but basically, as I have already told, it is making mob around a person to pressurize him to listen to their demands, and this is one of the major tactics used by the Indian unions. While writing answer for the types of strike, you need not to write details for each case law. That is why I have given what is held in that particular case law in just single lines, and that is sufficient as far as your exams are concerned. And with that, I am concluding. Thank you so much for subscribing my channel. Please like, share and comment my videos. All the very best for whatsoever purpose you are referring my channel, and thanks again. Good morning. In last lecture of industry law, we are study the last point. I think so. It is workman explanation of workmanship. उसके अंदर हम workman कौन होता है, employee होता है, and all खुद पर discuss किए थे. Okay. Then the next point is the layout section. Yeah, 2Q layout section of 3Q and SQ. Yeah, strict section. As per the SQ 2Q, the stricts क्या होते हैं? Means the cessation of work by a body, a person, employee, and industry action combination of concurrent refuse under the common understanding of number person who have been employed to continue to work to accept employment. वो IC body के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो स्ट्रिक्टली मीन द कैजेशन ऑफ वर्क ऑफ बाय अ बॉडी, एक बॉडी की तरह है, ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करते हैं, एक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन कॉन्करेंट रिफ्यूज और रिफ्यूजल एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंडर वो लोग रहते हैं. द इसेंशियल, इसमें क्या क्या होता है? दे मस्ट बी कैजेशन ऑफ वर्क. The cessation of work must be a body of a person employed in the industry. Okay, the restrict must have been action in combination. वो जो रहते हैं वो combination in action रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, और they must be concrete to refuse, और वो refuse भी करते हैं. Refusal under the common understanding of number of person who have been employed continuing work. Leg out the section as per 2 first. Leg out means the temporary closing of place, employment, and supervision of work. This the refuse by employee continues. Employee numbers, definition of leg out has been 3 integrated. There should be temporary closing of place, employment, or there should be supervision of work. There should be refuse the continuous employer, employee number of person employed by the employer. Leg out and opposites to strict a weapon to handle the employee. To bring with employee. Leg out is not closer. In leg out, employer close does not integrate it. Layoff of section 2K में क्या बोला हुआ है? Means the refuser या failure होते हैं, ये refuser रहते हैं, inability to employ account of shortage रहता है, यानी shortage of employee के बारे में बोला हुआ है. अब क्या shortage रहेगा, कब refuse करेगा वो production करना? अगर coal कम है यानी कोयला कम है, power of raw material it's not, power or raw material are the short, the accumulation of stock are short, breakdown of machinery, natural calamity, ये जो लीगल इश्यूज है, यानी अगर लीगली ऐसा कुछ हो रहा है तो ले ऑफ या लेट ऑफ कर सकते हो आप लोग. ओके, देन retention of section 200.
Retrenchment means the termination to the employee of service from workman. उसको terminate करना for any reason for whatever. Otherwise, then the punishment influenced by way of disciplinary action does not include it. Voluntary retirement of the worker or the retirement by workman of reaching the age of supervision. कैसे रिटायरमेंट लेना चाहिए? तो दो टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट है. फर्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट, खुद से रिटायरमेंट लेगा कि मुझे अभी काम नहीं करना है. और सेकेंडरी कौन सा रिटायरमेंट? रिटायरमेंट वर्क बाय रीचिंग, यानी उनकी एज करीब आती है रिटायरमेंट की, उस वक्त रिटायरमेंट दिया जाता है. टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूइंग इल हेल्थ. क्लोजर सेक्शन देखो क्या है? द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट देयर ऑफ वेजेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947. इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है? वेजेस मीन और रेम्यूनरेशन एक्सपेंसिबल टर्म्स ऑफ मनी. किसको वेजेस बोलता है? और रेम्यूनरेशन, जो पर्सन कोई भी, चाहे वो बड़ा से बड़ा एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, कैसा भी काम करता हो, उनको मिलने वाली वे ऑफ मनी इज वेजेस. फॉर एग्जाम्पल बॉस को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, बट इसको वो लोग, हम लोग क्या बोलेंगे? वेजेस ही बोलेंगे. इनकम हो रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, क्योंकि वो पर्सन इज अ लेबर. या विच इज वुड बी द पेबल फॉर वर्कमैन, काम करने वाले को मिलता है. इट इज अ टर्म एम्प्लॉयमेंट वेयर फुलफिल इन इंक्लूडिंग द डेयरनेस ऑफ अलाउंस, ट्रैवलिंग कंसेक्शन. अब इसमें क्या क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउ, यानी तुम अगर ट्रैवलिंग से आ रहे हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस, डिनर अलाउंस यानी एक टाइम का खाना, और यू आर अ बेसिक सैलरी. देन रिमेनिंग आर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड बहुत सी बातें रहती है, कैसे लेनी है उसके बारे में बोला हुआ है. एवरेज पे यानी कैसा देना चाहिए? फॉर द प्रोसीजर 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ इन केस मंथली पेड वर्कमैन. फॉर द प्रोसीडिंग 4 कंप्लीट वीक इन केस वीकली पेड ऑफ वर्कमैन. 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ यानी 3 महीने कम से कम कैलेंडर के तुम्हें कंप्लीट कंटिन्यू उनको वेजेस पेड करने ही है. अगर तुमने उसको जॉब रखा तो मिनिमम 3 महीने तुम्हारे इधर रहना चाहिए, उससे पहले तुम उसको निकाल नहीं सकते. और वीकली बेस पे रखे तो 4 वीक यानी 1 महीना तो भी तुम्हारे पास रहना चाहिए एज पर लेबर लॉ, एज पर वेजेस लॉ इन इंडस्ट्री एक्ट 1947. Okay, the average pay is respect of workman cannot be calculated under the aforesaid manner and shall be calculated as per the average of wages payable. So, for the calculating average pay, monthly wages shall be divided by 30. The principle of 26 working days is not being applied for determining the retirement compensation under section 25F. यानी जब 26 डे का वर्क रहता है, 4 डे संडे या 4 ऑफ डे होते हैं, लेकिन तुम्हें मंथली के हिसाब से पर डे कितना मिला अगर वेजेस पे मालूम करना है, तो नॉट डिवाइडेड बाय 26 के 4 डे ऑफ होते, डिवाइडेड बाय 30, बिकॉज के वो 4 डे जो ऑफ रहते हैं वो भी कैलकुलेशन इन वर्क होता है. ओके. Then the next point is control industries, means any industry by control of which by the union has been declared by the Center Act. Okay, awards क्या रहते हैं? Means the interim final determination of industry dispatch for any questions related to theory by any labor court. Okay, industry tribute or national industry tribunal इंक्लूडिंग द एट्रीब्यूट अवार्ड मेड बाय अंडर सेक्शन 10. अब इसमें अवार्ड्स क्या होते हैं? कि उसको मिलने वाली रेम्यूनरेशन में बेनिफिट्स देना, उसके बाद उसको बेनिफिट देना, अच्छे ऑफर्स देना एंड ऑल. पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, any railway service, any transport service, carriage passenger service or good by air, any service in on connection with working of major port or dockyards. They are the public related service. Any section of industry established on this work of which safety of establishment there. अब ऐसी जगह जब बहुत वर्क होता है, पब्लिक लिमिटेड रेवेन्यू रहता है, हार्ड वर्क रहता है, तो सेफ्टी ऑफिसर इज दैट. इट इज अंडर इंडस्ट्री लॉ मस्ट. Any industry which supplies power, light, water to public, any system of public convention in situation. ऐसी situation में क्या करना है? Like transport, banking, cotton textile, which approach the government may be satisfy the public emergency for public interest to require. वहाँ public emergency की जो चीजें वो रखना जरूरी है. मे बी कॉटन में तो आग लग सकती है, तो फायर एक्सटेंशन वहाँ रहना जरूरी है. वाटर में ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एक्सीडेंट कंपल्शन है, तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स होना जरूरी है एज पर इंडस्ट्रियल लॉ. देन अथॉरिटीज,
The new point, authorities are started from here. Works committee, in the case of any industry established in which 100 or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months. The appreciate government may be general or special. Special order required to employer consist work committee, consist of respected employer work and all. It shall be duty to work committee to promote measuring the securing preserving unit and goods relation between the employer and workman and is committed upon matter to their common interest. Okay, consulting officer, consulting proceeding officer means officer appointed under this act. कौन से act? Section 4 1947 of industry law, section 4 1 11 and 12. Consulting procedure means by the procedure held by consultant officer or board of council. अब ये जो ऑफिसर होता है कौन कंडक्ट करता है? बाय बोर्ड ऑफ काउंसिल. क्यों? गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड दैट ऑफिशियल गैजेट्स अपॉइंटमेंट सर्कुलर ऑफर चार्ज विद द ड्यूटी मैंडेटरी फॉर प्रमोशंस. अब जब प्रमोटिंग करना है किसी को तो प्रमोशन के साथ हमें गवर्नमेंटाइज होना होता है और जब गवर्नमेंटाइज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट का आदमी वहां होना जरूरी है. इसलिए काउंसिलेशन ऑफिसर इज मस्ट है. ही इज डिमांड टू बी द पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC, Indian Penal Code. The duty of officer is maintain coordinated relationship between employer and workman. Employer कौन होता है? ओनर ऑफ कंपनी. वर्कमैन काम करने वाला, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. इन दोनों के बीच में मेंटेन रहने वाला वो एक पर्सन रहता है. ये एक अंडर 21 IPC तुम्हें एस्टैब्लिश करना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द काउंसिल ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी इनटू डिस्पैच can enter the premise any establishment of giving responsibility notice dispatch in case of emergency. When the employer and employees are unable to settle the dispatch of workmen, refuse dispute the council office, conciliation office and intervention in bring about embellishing. जब भी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में होगा तो कंसिलेशन ऑफिस जो इंडस्ट्री लॉ के हिसाब से बनता जाता है वहां पे उसको लिया जाता है और उस मुद्दे को उस कोर्ट में फॉलोअप किया जाता है. अब उसके फॉलोअप के स्टेप्स है वो कैसे? देखो, स्टेप 1 पहले क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिलेटिव मैटर एंड टॉकिंग विद पार्टीज. देन दूसरा क्या है? इफ अ सेटलमेंट इज अराइव इन कोर्स द काउंसिल प्रोसीडिंग एंड द ऑफिस विल बी सेंट टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद मेमोरेंडम. यानी सेटलमेंट हो रही है तो सेटलमेंट की जाएंगी, उसकी रिपोर्ट लिखी जाएंगी और सीधा गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी कि इंडस्ट्री सेटलमेंट विद लेबर एंड एम्प्लॉयर हो चुका है और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. Okay, if no settlement is there, the officer shall send a report to government with the settlement given fact of circumstance. यानी अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से उसको circumstance पढ़ेंगे. In deal with the reasons in opinion why the settlement could not be attained. The government will be concede the report of conciliation offers if it is the tribunal, the national tribunal, it may be made not good. Okay. A report the government should be submitted within the 40 days earlier by the conciliation officer. यानी एक बार ऑफिसर ने डिक्लेयर किया तो उसके 14 डेज बाद वो रिपोर्ट भेजना जरूरी है. Within the report, sorry, within the approval, the conciliation officer, the time of submission and the report may be extended is agreed upon the written by all the parties of dispute. बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिस्पेंशंस. यानी दोनों के होने वाले चेयरमैन और 4 मेंबर्स की काउंसिल होती है. ये किसके लिए रहती है? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के झगड़े को खत्म करने. ओके, इफ अ पार्टी डज नॉट रिस्पेक्टेड विद द पेरिसेबल टाइम इन द गवर्नमेंट इफ फ्री even if there are the number of chairperson in absence in the board of can act. The quorum necessary is consists a meeting to two if the number of members are 3. The number of members is 3. The number of members are 5. The government may be an order to return the refuse in existing industry and dispatch of board. Government के हाथ में authority होती है कि इस
कमेटी को या इस चेयरपर्सन को या बोर्ड बॉडी को, जिसे हम बोर्ड ऑफ काउंसिल बोलते हैं, उसे वो डिस्पैच भी कर सकते हैं. वंस द मैटर इज रिफ्यूज ऑफ सच अथॉरिटीज, गवर्नमेंट मे प्रोहिबिट एनी कंटिन्यूअस ऑफ एनी स्ट्रिक ऑफ लैकआउट. स्ट्राइक या लैकआउट को फिर बाद में कैंसिल कर सकते हैं. यानी स्ट्राइक को शॉर्ट आउट करने का कैसा तरीका है, ये इस लॉज में बताया हुआ है. ओके, देन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिलेशन ऑफर एंड बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो कॉन्सिलेशन को कौन बनाता है, गवर्नमेंट कंसिल करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्टेड बाय मेंबर ऑफ योर एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग के मेंबर्स कौन होते हैं, वही लोग जो शेयर होल्डर होते हैं. द बोर्ड instead the procedure only the refuse the approval government appropriate by government. Council offers to introduce the consultative procedure in dispatch when industry dispatch existing start. यानी जब गवर्नमेंट को रिजेक्ट करता है, उस वक्त गवर्नमेंट काउंसिल को कंडक्ट कर सकती है कि ये लोग मेरा नहीं सुन रहे, तू उधर जाके दे. ओके, देन लाइक conciliation offer a board give a fact and conciliation is dispatch and effort may be settled in dispatch. Okay, in addition also make recommendation for the settlement of dispatch. The conciliation offer has been same power to admit or not a matter is conciliation, but the board does not have such power because the approbation government refuse it only such matter is in dispatch. Court of inquiry. The section 2F define court means the court in inquiry consists under the act, the provision related to the court inquiry and similar to the board of counsel. Government may be appoint one or more independent person in court of inquiry for investigation and matter connected with industrial dispatch. Parties of the dispatch may also join or separately apply for refuse. A court for counsel shall be inquire for reapplication. In short, वो क्या बोल रहा है, कोर्ट एंड इंक्वायरी के बीच में काउंसिल की बात को सुना जाएगा और काउंसिल जो पार्टीज को परफेक्ट काउंसिल जो प्रेजेंट करेंगी उसको कोर्ट पहले एक्सेप्ट करेगा, देन योर ड्यूटीज को इंक्वायरी करेगा. गवर्नमेंट में भी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट पर्सन फॉर कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन उस करने से पहले उस बंदे को अपॉइंट करने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं कि काउंसिल की बात को सुन सकते हैं. द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे बी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन. एक या एक से ज्यादा रख सकते हैं और वो पर्सनली अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इवन दो कोर्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर टू गिव डिसीजन. अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बीच में किसी को बीच में पावर नहीं है कि वो इंक्वायरी को डिसीजन या डिसमैक्स करे. ओके, then the second code is labor code. अब labor code कौन होता है, the appropriate government may be consist the notification one more labor code industry tribulation for national industry tribulation. अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या करने वाला है कि तुम्हारी रिकॉर्ड्स को लेबर के तरीके से कैलकुलेट करेगा. वहां लेबर की बात को देखा जाएगा, उनके लॉज को फॉलो किया जाएगा, इसे अवार्ड्स कहा जाता है. इंडस्ट्री लॉ इट्स कॉल्ड अवार्ड्स. दिस एक्ट मेक्स बोर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्पैच may be refused to the authority. Power of labor codes क्या है, it is preceding offer may for purpose inquiry after giving the responsible notice enter the permission of establishment. He has the same power to vested the civil code under the code of civil procedure when trying suit, namely informal attendance any the person and examine him or oath, उसको और उसकी ली हुई कसम को एग्जामिन किया जाएगा. कॉम्प्लीमेंट द प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द मैटरलिटी. डॉक्यूमेंट्री को देखा जाएगा और मैटराइजर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर किया जाएगा. इशू के ऊपर कम्युनिकेशन होगा एंड देन लाइक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वैसे लेबर की प्रोसीडिंग होंगी और उस प्रोसीडिंग को स्टडी किया जाएगा. ओके, अब अगर उसका जज होना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ही और बीइंग द जज ऑफ हाई कोर्ट और ही हैज बीन द पीरियड ऑफ मस्ट लेस देन 3 years बीइंग द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज के 3 साल निकालने होंगे या फिर हाई कोर्ट का करंट जज होना चाहिए. ऐसे दो में से एक ही लेबर कोर्ट का जज हो सकता है. ही हैज आल्सो जुडिकल ऑफिसर इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7. और किसी भी जुडिकल यानी जो जजमेंटल ऑफिस रहते हैं जहाँ पे लॉज के ऊपर फॉलो होता है और मिनिमम 7 ईयर तो उसने काम करना चाहिए ताकि उसको लीगल एसेस मैक्सिमम मालूम हो. He has been the presiding officer of labor court consist under the providing act state act and not less than 5.
और जो प्रोवाइड स्टेट एक्ट है उसके अंदर 5 years उसने काम करना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और द कंटिन्यू ऑफिसर प्रेसिडिंग ऑफिसर लेबर कोड ट्रेडिशनल, यानी कोई उसमें से उनमें से ही किसी को नहीं ले सकते, या लेबर का पर्सन लेबर कोर्ट्स में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उधर का ही बंदा उधर रहेगा तो एक साइड में डिसीजन हो सकता है। ओके, then the next point is industrial tribulation. Industrial tribulation, according to the tribulation means the industrial tribulation, under this March 1950, these acts are passed. Tribunal shall be consist of one person appointed by the government who shall be or has been judge, high court and Cosby district judge for no less than 3 years. जैसे इससे पहले मैंने बोला, पावर क्या रहती है इसकी? The proceeding of an industrial tribunal may for the purpose of inquiry enter the permission to establish to which dispatch the related after giving the respondable notice. Tribunal has the same power similar to civil court. उसको सिविल कोर्ट की पावर होती है। एफर्ट टू द अटेंडेंस एनी पर्सन टू एग्जामिन हिम एंड ओथ, वो क्या काम करेगा जैसे सिविल कोर्ट में किए जाते हैं, वो पहले शपथ लेगा, शपथ के बाद उसको उसकी गवाही को एग्जामिन करेगा और उस एग्जामिन को फॉलो करेगा। उसके बाद वो कौन से डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट की स्टडी होगी, सब प्रोसीडिंग। ओके, देन इशुइंग समवन फॉर एग्जामिन एंड विटनेस को देखा जाएगा। एग्जामिन ऑल मैटर दैट ऑल आर रिलेवेंट। ओके, ही has all the power to vested the section 9328 IPC even the proceeding him demand for judging procedure. ओके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस बंदे की? ही हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट या एटलीस्ट 3 year किसका डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ओके, नो पर्सन शल बी अपॉइंटेड फ्रॉम कंटिन्यू ऑफ द ऑफिसर्स, अपने जो ऑफिसर्स रहेंगे लेबर्स कोर्ट्स रहेगा उसमें से हम किसी को नहीं लेंगे, वो जो रहेगा वो आउट ऑफ द यूर कोर्ट रहेगा। ओके, इसके बाद है नेशनल ट्रिब्यूट। नेशनल ट्रिब्यूट सेक्शन 21 स्पेशल नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूट कंसिस्ट अंडर द सेक्शन 7B सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिस्ट द नेशनल ट्रिब्यूट सेक्शन। अब नेशन के ही हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट, अब नेशनल लेवल का इसका जजमेंट, और 2 सेशन हैविंग दे आर द कंडक्टेड। क्वालिफिकेशन जस्ट नेशनल का जो हाई कोर्ट का रहेगा वही वहाँ पे काम कर सकता है, वही कोई नहीं। इससे पहले जो था कौन सा जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें नेशनल हाई कोर्ट या फिर कोई भी यानी डिस्ट्रिक्ट के 3 year वाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेशनल ट्रिब्यूनल में कौन रहेगा? हाई कोर्ट का ही जज काम कर सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे द नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड अवार्ड्स। ओके, थैंक यू।